Guys, today we will be solving our first lead code problem statement to sum. तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. Given an array of integer nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution, and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ कि हमें एरे में से ऐसे दो एलिमेंट निकालने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो. अनदर थिंग इज कि हमें इनपुट में से एक इंडाइसेस एक ही बार यूज करना है, यानी एक एलिमेंट एक एरे में से एक ही बार यूज करना है. Other thing is कि there will be only one solution of the problem. So there will not be a multiple pair in the array that are getting sum equal to the target value. So these two things we need to keep in mind. Uh, these are the test case 2, 7, 11, 15. The target is 9, right? Clearly 2, 7 have the sum equal to 9. So 0, 1 is the answer. 3, 2, 4. The target is 6. So, right? 2, 4 have the sum 6. 3, 3 cannot be the answer because we can only use one element one time. So 3 cannot be used like 3, 3, right? 3, 3 के लिए the target is 6, so 0, 1, right? We also need to check the constraint. तो कोई भी अगर अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है तो कॉन्स्टेंट भी रीड करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार हम अपने दिमाग के हिसाब से कोई भी थोड़ा सा टेस्ट केस लेके उसके हिसाब से एल्गोरिथम बिल्ड कर देते हैं. कंस्ट्रेंट इसलिए दिए जाते हैं कि आप जो भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो सारे एज केस कवर करे. और अगर डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ऐसा नहीं हो कि आपकी एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है उसको प्रोसेस करने के लिए. तो रीड दिस कंसेंट. तो कंसेंट में कुछ नहीं दे रखा. उनके नंबर्स की लेंथ कितनी है, एरे का साइज कितना है, जो टारगेट आ रहा है उसका साइज कितना है, तो ये सब दे रखा है. वन कंसेंट ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, राइट? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. Another thing is just a follow up. Can you come up with an algorithm that is less than O(n) square time complexity? तो हमें ऐसी एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर से कम हो. So if we take this edge case 2, 7, 11, 5, right? 2, 7, 11, 5, and we need to find the pair in this array that have the sum equal to 9, right? So the first solution that came in mind, right? So in the simpler way, we can simply can execute two loop from I equal to uh, g I equal to 0 to length, right? And another nested loop from I plus 1 to length, right? And what we can do, we can simply can check if the pair have the sum equal to target, and we can return the pair, right? This is the pseudo code. Can we calculate the time complexity? The first loop is I equal to 0 to length, so that have the time complexity of n, right? And और उनको समझाने के लिए जिनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना नहीं आता तो बहुत आसान है. तो आई इक्वल टू 0 फ्रॉम 2, तो वो 2 से स्टार्ट होगा और लेंथ तक जाएगा, राइट? तो 0 से लेकर उसकी लेंथ तक गया तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन, राइट? क्योंकि वो हर एक एलिमेंट को स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, राइट? पहले 2, 7, 11, 5, राइट? राइट, उसमें 3 एलिमेंट होएंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. अगर 4 एलिमेंट होगा तो 4 हो जाएगी. तो बेसिकली सिक्वेंशियल जा रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी. अगर
अगर लूप नेस्टेड होता है तो हम उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फ्रॉम जे इक्वल टू आई प्लस वन टू लेंथ इज ऑल्सो एन, राइट? एंड वी कैन सिंपली multiply it. The overall time complexity is O n square of the nested two loops. So, right? But our problem statement said कि हमें ऐसे एल्गोरिथम फाइंड करनी है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर से कम हो। तो जिनको अगर कोई कुछ भी सॉल्व करने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिन्होंने अभी अभी नया स्टार्ट किया है, अगर वो ओ एन स्क्वायर में भी सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। उसको निकालने के बाद फिर आप सोचोगे कैसे मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, राइट? इसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। पर जो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर है, जिनको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की नॉलेज है, उनको पहले सोच के एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो दिस सॉल्यूशन को हटाते हैं और दूसरा सॉल्यूशन सोचते हैं जो जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर से कम हो। तो अगर हम हर एक एरे के साइज पे इटरेट करें और सारे एलिमेंट को किसी डेटा स्ट्रक्चर में सेव करें, राइट? सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट टू सेव कर लिया। जब हम सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं, डेट इज सेवन, तो वी कैन check, right, the target minus that particular element difference exist in this data structure or not. So 9 minus 7 is equal to 2. So we just need to check if we have any data structure that have the element 2 or not. So we have, right? So we can simply can know कि what are the two elements that have the uh, sum equal to 9। पर इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि सपोज हम एक एरे लिस्ट लेते हैं जिसमें हमने हर एक एलिमेंट को सेव करना स्टार्ट कर दिया, पहले टू को सेव किया। तो यहाँ पे मैं एक एरे लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टू को सेव कर दिया, फिर मेरे पास सेवन आया, तो मैंने टारगेट माइनस नाइन माइनस सेवन किया, दैट इज इक्वल टू टू। So I am checking it exists in the array list or not. That I can check, but again I need to do the searching part, right? And if I got the element, I also need to find the index of it. That will be that is also too much of work. So can we came up with any data structure from which I can check if the element exists on that particular data structure or not, and also I can get index very quickly. Is there any data structure? So the answer is yes, the hatch map. The hatch map is nothing, it is just a key value pair, and key will always be unique in the hatch map. So there will be only one key. So I can explain the hatch map concept. Suppose there is a key one that point to value num1. Uh, then there is another key that point to one of my friend Harinder, and there is one more key that point to my another friend, that is Nikhil. So how can I so these key one, two, three will always be unique. So they can be like any kind of key. I'm just taking an example, one, two, three. There when we x, y, z, something, any kind of key. And it point to the value, key, comma, value. So to get the value, uh, we can simply say like map, our hash map, right? Dot get that key value. So I can pass two and I can get the value Harinder, right? So this is the concept of the hash map. So we will going to use the hash map to solve this problem statement. What we are going to do, when we are iterating over the element, we can create one intermediary map of type integer comma integer, right? Int comma int, right? And
and we can start adding value. So the first element we will be adding is 2, right? Two will be the key, and the indices will be the value. So what is the indices of 2? 0, right? If we go to the 7, so 7 target, when we are at 7, we can say ki 9 minus 7 is equal to 2, right? So we can check in the map, it have the key 2 or not, right? It have. So we can get the indexes directly, and the time complexity of getting the element is in the map is constant, that is O big O of 1. So it is always constant. So we are not searching it in a iterate manner. So we simply get the value of the key. We simply find the difference, that is target minus that current element, and we try to search in the existing map. And if that key exists, we simply get the index and return the current index, comma, the index that we get from the map, right? Map dot get whatever the difference is. We can also say uh, current element, comma, minus target minus current element, right? So this will be our answer. Let's start coding. So first, what we are going to do, we will going to create a map, comma integer. Okay, Mhm. Search map, right? Search map or something, and maybe we can call it simply map. And we are creating one hash map that have the key as an integer and value is also integer. Then we iterate over our all the element nums dot length I plus plus, right? Now we find the difference. What is the difference? That is target minus the current element, right? So what we are doing, we are finding the difference. So 9 minus 2 will be here. When it is here, 9 minus 2 will be 7, right? Initially. But uh, then we can check like if that 7 exists in the map or not. If it exists, we can return the answer. If it does not exist, we will add the value in the map. So if uh, map dot contains key, right? Contains key of the difference, we can simply return the answer. So we can get the previous element index uh, by using map.get, and we can pass the key. What is our key? Obviously the difference, right? That what I have said, like 7, right? When we iterate over the 7, 9 minus 7 equal to 2. We already have saved the key and the value pair 2, comma, the indexes of the element 2, right? So we can simply can get map.get target minus the current element if it exists or not. So if the key exists, we can simply return map.get the previous element and the current element index, right? So we can simply can create an array of size 2, and we can pass the value uh, the previous element map.get, comma, uh, difference, and the current element, right? Very easy. If that difference is not exist in the map as an key, then what we are going to do? We are simply going to store the value in the map. So difference, not difference, the current index value, comma, the index, right?
So here, when we are iterating over 2, we will be saving 2 and the index of the 2, that is 0. When we go to 7, we will check like 9 minus 2 equal to 7 exist in the map or not. It exists, right? Then we will return the indexes of the first comma 0, right? So map dot put. We are assuming like in the for loop we always will get an answer, because you may assume that each input would have exactly one solution. तो एक ना एक सॉल्यूशन होगा ही. अगर नहीं हुआ तो हम इसको नल रिटर्न कर रहे हैं, बट यहाँ तक कभी स्टेटमेंट पहुंचेगा नहीं. हमें तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा. Another thing is कि like if we calculate the time complexity of this solution, we are iterating over, we have only one uh, loop from I equal to 0 to n. So the time complexity is n in the worst case. In the worst case is कि like when the element exists in the last. So the time complexity is n, and and our searching is also fast. We are simply searching in the constant time. So that is fine. Uh, so let's run the solution if it works. So first we run our sample test case, the small test cases. So there are some compile time errors. Let's see how we can solve it. Array creation with both dimension expression and initialization is illegal. Diamond so what it is saying कि हम Java में size और element दोनों the elements in the array cannot define together. So that is fine. Now we will run it again. Hope it works. Yeah, it is working. So let's run in the actual test case. Yeah, it runs. Yeah.